Satar Sadasman Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Ananda Koti Osnamilni ki jai. Nama Acharya Srila Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivedanta ki jai. Sri Radha Krishna Gaur Bhatnath Sam Radha Kundi Bhajam ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Navaveda Bhaktivedanta ki jai. All glories to the Asma. All glories to the Asma. All glories to the Asma. Thank you very much. The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 6th Canto, 1st Chapter, text number 51, given by His Divine Grace, A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on August 4th, 1975, in Detroit, Michigan. Subtle body endowed with the 5 knowledge-acquiring senses, the 5 working senses, the 5 objects of sense gratification, and the mind, altogether 16 parts, which is the effect of the 3 modes of material nature, and is composed of very strong and insurmountable desires, causes the living entity to transmigrate from one body to another within the kingdom of human life, animal life, or higher demigod life. When he gets the body of a demigod, he is certainly very jubilant. When he gets the body of a human being, he is always in lamentation. When he gets the body of an animal, he is always afraid. In this way, in all conditions, he is miserable. This miserable condition is called samskriti, or transmigration in material life. Taritat surusakalam ningang shakti trayat maham bhaktin samsiting pungsi harsusuku bhayaditam. This is called Sankhya Yoga. To understand the analytical process of this body. In the Bhagavad Gita, we have learned that Dehinasmin yatha dehi kaumanajo manangajara tatha dehantara prapti dhira sattanamayati. So, with this combination of 16 elements, within that there is the soul. Is enwrapped. And so many wrappers, Mon, Buddhi, Ahankar, altogether 24 wrappers. And within that wrappers there is the living soul. The modern science, they cannot understand this. They are searching after the active principle or living force within this body, but they have no information. And here in the Srimad Bhagavatam, you get the full analysis. Taditat surusakalam. The analysis is that the living entity is enwrapped, first of all, with 16 wrappers, surusakalam. What are those? 10 senses, 10 working senses, and 5 working senses, and 5 knowledge gathering senses. We are experiencing, we are perceiving by using our 5 knowledge gathering senses, just like eyes, ear, chakku karna, smell, nose, chakku karna, nasika, jiva, tongue, touch, hand. In this way, we get knowledge, experience. Sometimes we stress
on the knowledge experienced by the eyes. I want to see. And that is not the only source of knowledge. There are many blind men who cannot see, but he has got full knowledge. There are other sources of knowledge. Just like a mango. You see the mango, but you cannot experience the full knowledge unless you use the tongue. Then you can say whether it is good mango or bad mango. Not by seeing. So, these are our knowledge gathering senses, and there are working senses. There's a hand, leg, the stomach, the rectum, the genital. These are working senses. In this way, 10 senses and 5 sense objects. We have got eyes, so there must be object of seeing. Panchatan matra, roop ras. With eyes we can see the form, with tongue we can taste roop ras, sabda, with the ear we can hear the sound. In this way, 5 sense objects. 3, 5 means 15. And the mind is the center of directing the senses. Indriyani pararahu, indriyabha para manaha. The senses are there, sense objects are there, but without mind it cannot work. Therefore, the mind is the 16th item, and everything is being used by whom? By the soul. That was 17th. And in this gross body there are 5 elements and 3 subtle elements. Bhumira vayu sangamana buddhiri vacha. In this way there are 24 elements which is covering the 25th living entity, and he is packed up in this way. Then taditang sur sakalang lingam. Lingam means the form. Lingam shaktitrayat mahat. Just like we have got this microphone, so the machine is made of these elements that is analyzed. Then how it is working? Shaktitraya, the Satagun, Rajagun, Tamagun, Mahat Tattva, the material elements. In this way, the living entity is under the full control of material nature. And everything is coming out swiftly by our desire. These desires are also being generated from the soul, but by the infection of 3 qualities. Satagun, Rajagun, Tamagun. So just try to understand how the nature's law is working very finely and immediate. Parasya Shakti Vividaiva Sriyate, and above all these things, the nature's working, there is Krishna. Maya Dhakshena Prakriti Sriyate Sacharathanam. The Prakriti nature, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasa, everything is being done, just like the big airship is floating in the sky, but the pilot is pushing the button. Similarly, the whole cosmic manifestation is working, but the button pusher is Krishna.
Parasya Shakti Vividaiva Siyate. His knowledge is so perfect and he has made this machine so perfect. A man can make so nice, perfect machine. So what to speak about God? So, Mayadhaksena Praditi Siyate Sacharacharam. So, the basic principle, we are under these laws of material nature only for our desire. That is the basic principle. So, the Krishna consciousness movement means we have to change the desire. Annavilasita sunnam. Sunnam means zero. As soon as we make all other desires, other means there are two things, Krishna and Maya. So this material world means Maya. Maya means which is not fact. It is an illusion, just like we dream at night. It is no fact, but it works. Similarly, this material world is called Maya, means it is not factually in existence, but it is working, hallucination. So, if we want to be really, because we are within this entanglement, 24 elements as we have analyzed, within this, the result is that being influenced by this Maya or Mahat Tattva, who is working with the three modes of material nature, and I am desiring, my basic principle of my material existence is my desire, and as soon as I desire, by the order of Krishna, immediately the instruments and facilities are given to me. In this way, Bhakti Anusangsiti Kungsi. As I desire, immediately the instrument, this body is an instrument. Ishara Sarvabhutanam Riddese Arjuna Tishtati. Start this time. Ishara Sarvabhutanam Riddese Arjuna Tishtati. Krishna is situated in everyone's heart, and as I am desiring, he has given us full freedom, not full freedom, but freedom. Krishna is so kind that just like father, mother gives the child little freedom and it moves here and there, but always looking after, may not catch up any fire, may not fall down in the water, or some animal may not attack. So, similarly, we are desiring, and Krishna is giving us facilities. But if we want to stop this repetition of birth and death, and change of different atmosphere, as it is said, Harasa, Shoka, Bhaya, Arti. This material existence means sometimes you are very jubilant. I have got this. Now I have got in America. I have got so many cars. Harasa, jubilant. And then Shoka, and you take birth in some other place, lamentation, scarcity, this is not, this is not. And Bhaya. So there are 8,400,000 species of forms of life, and by this process we are entering into different types of atmosphere and subjected to sometimes harsa, jubilation, sometimes lamentation, sometimes fear. Even in this life we are undergoing such changes. So if one is actually intelligent, then he should consider that I don't want this lamentation
Why it is forced upon me? It is forced upon me on my desire. On my desire. It is not forced by any external thing. It is my desire. I wanted this position and I got it by the grace of Krishna, but when I got it, then again, because the nature is like that, material nature. Dukkhalayam asasata. You can place yourself in any position. The whole thing is dukkhalayam. It is miserable. We are simply changing that if I am posted in this position, then I will be happy. If I am posted in this position, then I will be happy. And we are changing different position. Harsha soko bhayako. But if we want to stop this, if we want to come to our original position means we are part and parcel of God. So qualitatively, the same position, it may be small, but the position is Satchidananda Vigraha, eternal life of bliss and knowledge. If we want to come to that, then the process is that we should not anymore desire or manufacture some ideas for becoming happy in this material world. This is intelligence. Therefore, Rupa Goswami says, Annavilasita sunnam. You have to make zero all material desires. Annavilas sunnam means zero. Zero, that is Buddhist philosophy, to make zero, sunnavadi, to make everything void. No, that cannot be. I cannot make my desires zero, that is not possible, because I am living being. I may select what kind of desires I will have, that is intelligence. But desirelessness is not possible. Therefore, the next item is that Annavilasita sunnam, you make your material desires zero. Why? Then what shall I do next? Shall I become void and finish? No. Then your real life begins. What is that? Annavilasita sunnam jnana karma dhanavritam anukullena krishnānusilanam. Anukullena krishnānusilanam. We are desires, many types of desires, jnana and karma. Karma platform is foolishness. It's like everywhere. They are very busy, karmi, but they do not know what is the aim of life. That is called karma. Acting something and suffering again. This is called karma. And jnana means one who understands that by analysis that these wrappers, material wrappers, these 15, 5 sense organs, 5 object of sense enjoyment, in this way 24 wrapper. So how I am to get out of this wrappings? That is intelligence, that is jnani. But a jnani does not know that I get out from this entanglement, then where I stay, that they do not know. That information is given by Krishna, that give up this and take up me. Negative and positive both. Sarva dharman parityaja, give up this nonsense desire, then what to do? Na mame kamusaranam. Come to me, under me. This is required. Anukullena krishnana. Mame kamusaranam vraja. That is not varietyless. That I surrender into you, then business finished. No. Saranam vraja means anukullena krishnānusilanam. What Krishna says, you do that. That's why Arjuna was not willing to fight, but
when he listened Bhagavad Gita from Krishna, then he agreed to fight. So our first business is that if we want to stop this repetition of birth and death, and sometimes we are very happy, sometimes we are very unhappy, sometimes we are in fearfulness, sometimes in so many other calamities, then our first business is that we shall stop all these material desires. Annavilasita sunnam. To stop means the desire cannot be stopped, because we are living entities. Life, we are not dead stone that desires will be stopped. No. Desires are to be purified. Sarvapadhi vinirmuktam tatparatena nirma. Desires to purify. Everyone is working under some impure consciousness. Just like nationalism. I am American, I am Indian, I am Englishman, I am German. This desire is polluted. Because I am spirit soul, part and parcel of Krishna. What is the benefit by identifying with America or India? This is called purification of the desire. Everyone is working under national and they are fighting with one another because the desire is impure. So the problem, the whole problem of the material world can be solved only when we purify our desires. Annavilasita sadnam jnana karmadhanavritam anukullena Krishna. Anukul, what Krishna says. Krishna is not dead. Therefore anukullena. What Krishna says, we have to do that. Krishna says to Arjuna to fight. So we have to meet the situation as Krishna desired by him. Sometimes he may say, you sit down. So we have to carry out only. The Krishna is not dead. He can give us varieties of order. And our position is that we shall simply carry out the order. That is life. Otherwise, we are under the clutches of Maya or material nature. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvas. We are thinking that I am the Lord, everything. That is not the fact. And the fact is that we have to work under somebody. That is our real position. Jive Sarupa Nitya Krishna Das. We are worker. We are not enjoyer. But unfortunately, we are trying to take the position of enjoyer. That is Maya. That is Maya. And if we agree to work under the direction of Krishna, then our original life is revived. That is what the Krishna consciousness movement means, that we are trying to educate people to change the consciousness. We have got so many desires under different consciousness. So one desire, that I am eternal servant of Krishna, this is called mukti. As soon as Krishna says, Sarvadharman parityajya mamekam saranam vaja, this is mukti. If we give up all other desires and agree to accept Krishna's desires, that mamekam saranam vaja, you are surrendered unto me, that is mukti, that is liberation. Otherwise, under the influence of these 24 elements and the material nature and the three gunas, infection, bhakti anusamsiting pumsi harsasopo bhayadida. Go on changing anybody. The subject matter is very difficult, but we have to learn it from Shastra, what is our position. Otherwise, to realize these things, it is not very easy. But if we accept the direction of the Shastra, that this is our position, that we cannot know what is my disease, and if I go to a doctor, physician, he can feel the pulse and he can recommend, this is your disease,
you do like this. So, if we want to avoid the tiresome, troublesome, miserable condition of this material world, then we have to accept the direction given in the Shastras. But we are so dull, we cannot even understand what is the miserable condition of our life. Dead, stone-like, or animal-like. The animal cannot understand. But there is possibility. Sometimes when the miserable condition is very acute, we feel how to get out of it. That is intelligence. But if we take the direction of the Shastras, Sadhu Guru Shastra Vakya, Guru Mukha Padma Vakya, Chittete Koriya Oikya, Arana Koriya Vadhyas. Then there is possibility of getting out of this clutches, entanglement, and become free again and go back to home, back to God. Thank you very much. हरे कृष्णा। तो आज हम सुन रहे थे श्रील प्रभुपाद से श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 51 ये श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो शुरू में प्रभुपाद बता रहे थे कि किस प्रकार से ये आत्मा, ये जो अलग अलग तत्व है, एलिमेंट्स है, उसमें फंसा रहता है। सो 24 जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया, हाउ डज दिस 24 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, व्हाट आर दिस 24 एलिमेंट्स। ओके माता जी। I will try, Prabhuji. 5 working senses, 5 knowledge gathering senses, 5 sense objects, mind. 16 हो गया अभी। 21 हो गया ना सब। 5 plus 5 plus 5 working, is 15. 5 knowledge gathering, 5 sense objects and mind. One mind is 16. Yes, and yes, 5 means elements. Okay. Bhumir, Apa, Anala, Vayu, Kham. And man, buddhi, ahankar. Oh, 8. Haribo. एंड इसमें आत्मा फंसा रहता है। एंड प्रभुपाद कहते हैं समटाइम्स ज्ञानीज दे इंक्लूड सोल ऑल्सो, तो आत्मा को भी कंसिडर करते हैं, इसलिए कभी 25 एलिमेंट भी कहा जाता है। ओके। और फिर प्रभुपाद ने इसके बाद बताया कि कैसे एक इंद्रिय ये पूरा ज्ञान हमको नहीं दे सकता, तो उसके लिए प्रभुपाद ने एक उदाहरण भी दिया। ओके, पांडुपुत्र जी। Hare Krishna, Prabhupada was saying that, see, for example, you can see a mango, but you cannot understand until you use the tongue. You have to taste it. So this way, different indriyas are used to get knowledge. And Prabhupada also gave another example of person who blind. They have full knowledge. हाँ, अगर वो देख भी नहीं सकते, लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे उनको ज्ञान भी है, लेकिन सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आँख से ही पूरा ज्ञान मिलता है। तो उस प्रकार से ये उदाहरण दिया। हरि वो। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया और बताया कि किस प्रकार से कृष्ण ये कंट्रोलर है। कृष्ण इज द कंट्रोलर। ओके, शंतनु प्रभु। प्रभुपाद बता रहे थे कि एक एरोप्लेन का एग्जांपल दिया कि एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, देयर आर सो मेनी थिंग्स बट द पायलट जस्ट पुशेस द बटन। सो सिमिलरली कृष्ण है सो मेनी वैरायटीज ऑफ एनर्जीज, बट कृष्ण द एनर्जीज आर एक्टिंग, बट कृष्ण इज द पर्सन हु इज पुशिंग द बटन एंड मेकिंग थिंग्स वर्क। सो अल्टीमेटली कृष्ण इज द कंट्रोलर। हरि बोल। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण अगर कंट्रोलर है, लेकिन जब कोई भौतिक
व्हेन समवन स्टक इन द मटेरियल नेचर, ये भौतिक सृष्टि में फंस जाता है तो क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है? अभी सारी सृष्टि कृष्ण के अंडर है, कृष्ण इज अ कंट्रोलर, लेकिन जीव ये प्रकृति में फंस जाता है, तो उसको इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? पूरा क्लास उसके ऊपर था. ओके, यस आयुष ब्रो. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभुपाद कह रहे थे कि वी हैव टू चेंज आवर डिजायर. हाँ, एंड वी हैव टू मेक इट कृष्णा कॉन्शियस. हाँ, we have to make it Krishna conscious. We have to change the desire. Hari Om. प्रभुपाद कह रहे थे we are under the laws of material nature only for our desire. सिर्फ हमारी इच्छा के लिए हम फंसे हैं, तो हमको क्या करना है? कृष्ण के लिए उसको परिवर्तित करना है. ओके, तो फिर प्रभुपाद ने कहा जैसे अन्याभिलाषिता शून्यम, और इसको प्रभुपाद ने कहा जो अन्य मतलब अदर जो बाकी की चीज़ है वो दो है, एक है कृष्ण, एक है माया. मतलब प्रभुपाद कह रहे दो चीज़ है, कृष्ण और माया. जो कृष्ण नहीं है वो माया है. तो फिर ये माया को समझाने के लिए प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया. तो कैसे समझाया प्रभुपाद ने माया क्या है, और एक उदाहरण दिया. शिवेंद्र ब्रो. माया मीन्स दैट विच इज़ नॉट. और उदाहरण दिए कि जैसे हम सोते हैं तो सपना देखते हैं, वी ड्रीम, वो होता नहीं है बट इट स्टिल अकर्स. तो वही उदाहरण होता नहीं लेकिन काम करता है. इट इज़ नॉट फैक्ट बट इट वर्क्स. तो वैसे ही माया है नहीं लेकिन काम करता है. हाँ, तो क्या है माया? क्या है? वही अपने उदाहरण बराबर दिया, लेकिन व्हाट इज दैट माया? This material world. हाँ, this material world is my correct. How? ये है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे क्या है? It is working. It is हरे कृष्ण. It is in existence, but it is like a hallucination. प्रभुपाद कह रहे थे, है कि नहीं? ये क्या है? hallucination को क्या कहते हैं? भ्रम. ठीक है, भ्रम नहीं. तो एक प्रकार से क्या है, व्यक्ति अनुभव करता है जो नहीं है एक प्रकार से. ही इज इन हेलुसिनेशन. तो वैसे प्रभुपाद कह रहे थे माया क्या है? रात को हम सोते हैं तो फैक्ट नहीं है लेकिन अनुभव होता है. तो वैसे भौतिक जगत एक्चुअली क्या है? इस प्रकार से है. हरि ओम. हाँ, और फिर प्रभुपाद ने कहा जैसे ही हम कृष्ण के पास टर्न करते हैं, व्हेन वी टर्न टुवर्ड्स कृष्णा, जैसे ही तो क्या होता है? जैसे हम इच्छा करते हैं कृष्ण के लिए तो क्या होता है? प्रभुपाद कह रहे हैं as soon as we turn or we change desire to Krishna, प्रभुपाद ने कहा immediately something happens. Okay, अंकित प्रो. हमें मुक्ति मिलती है? नहीं. ओके, माता जी इधर बैक साइड पीछे. Hare Krishna. As soon as I desire, the instruments and facilities are given to me. हरि बोल. वो वस्तुएं और सुविधा कृष्ण प्रदान करते हैं ताकि हम कृष्ण के पास जा सके. तो प्रभुपाद कह रहे थे. और फिर प्रभुपाद कह रहे थे हर्ष, शोक, भय, ये तीन चीज़ें जो हमें बार बार क्या है तकलीफ देते इस दुनिया में. तो इससे फ्री होने के लिए, इससे मुक्त पाने के लिए क्या सॉल्यूशन प्रभुपाद ने बताया है? दो चीजें कृष्ण ने कहा है, वी हैव टू डू दैट. ओके, हरे नाम. जी एक ही दिमाग में आया अभी. तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि
ये सब हर्ष शोक भय से बाहर निकलने के लिए आप इस भौतिक जगत में खुशी ढूंढना बंद कर दो, ये बुद्धि है। हाँ, पहला तो प्रभुपाद ने कहा क्या है, डोंट मैन्युफैक्चर आइडियाज़ फॉर बिकमिंग हैप्पी इन द वर्ल्ड। तो सारे जो अलग अलग आइडियाज़ उसको मत करो। और दूसरा, जो कृष्ण बोलते हैं वो करो। नहीं, वो बाद में आ जाएगा। एक सही। और प्रभुपाद ने कहा बाकी दूसरा इच्छा मत करो, डोंट डिजायर एनीथिंग अदर। तो इस प्रकार से दो चीज़ है। हरि बोल। और फिर प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार से हमारे इच्छाएं हैं। ये जनरली दो प्रकार के इच्छा में जीव फंस जाता है, एक है ज्ञान और कर्म। तो प्रभुपाद ने कहा कर्म प्लेटफॉर्म इज फुलिशनेस, ये एक मूर्खता है कर्म का स्तर। और जब ये जो ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी इसमें फंस जाते हैं। एक प्रकार से वो मुक्त होते हैं ये 24 तत्वों से, लेकिन वो फिर से फंस जाते हैं। तो वो कैसे समझाए प्रभुपाद ने? तो मुक्त तो होते 24 माता जी। So Prabhupada said कि karmis they are foolish because they are very busy but they don't know the aim of life. और ज्ञानी इसके लिए बोला they know कि हमें इस रैपर से बाहर निकलना है, but they don't know कृष्णा नहीं पता है उन्हें, फाइनल गोल ऑफ लाइफ नहीं पता है। वो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में और फिर then they come back. हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा वो तो मुक्त होते, लेकिन उनको मालूम नहीं मुक्त होने के बाद रहना किधर है। So Prabhupada कह रहे से they know I want to get out of this entanglement, but they don't know where I have to stay. हरि बोल। और फिर प्रभुपाद कह रहे थे लेकिन कृष्ण हमको बताते हैं कि उसके बाद क्या करना है। 24 तत्व कम टू मी एंड बी अंडर मी, प्रभुपाद कह रहे थे, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और जो अभी इच्छाएं हैं उसको प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण के तरफ हमको उसको मोड़ना है। और इसको प्रभुपाद कह रहे थे कि इसको शुद्धिकरण, जो इच्छाओं का शुद्धिकरण इसको कहते हैं। तो उसको कैसे समझाया प्रभुपाद ने, क्या ये शुद्धिकरण मतलब क्या है? उसके लिए एक उदाहरण भी दिया था प्रभुपाद ने भगवद गीता से। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया था भगवद गीता से, अर्जुन का उदाहरण दिया था। अर्जुन लिसन टू कृष्णा एंड ही इज़ रेडी टू फाइट। सो हमें हमारी डिज़ायर जो है प्यूरिफाइड करनी होगी बाय लिसनिंग टू कृष्णा। हाँ, प्रभुपाद कहे वी हैव टू डू व्हाट कृष्णा सेज। ये हृदय हमारे इच्छाओं का शुद्धिकरण है, जो भी कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, तो अर्जुन ने युद्ध किया। प्रभुपाद कह रहे थे अगर कृष्ण ने कहा बैठ जाओ, प्रभुपाद कह वी हैव टू सिंपली कैरी आउट दैट, सिर्फ बैठना है। सो प्रभुपाद कह रहे थे कृष्ण ये क्या है, ये एक जड़ वस्तु नहीं है। कृष्ण इज नॉट डेड। यस, ही गिव्स अस वैराइटीज ऑफ ऑर्डर्स एंड वी हैव टू फुलफिल दैट। हरि बोल। अभी मुक्ति का अर्थ क्या है? और इसको एक श्लोक भी प्रभुपाद ने इससे जोड़ा था। व्हाट इज ओके माता जी का। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे दो अर्थ दिए थे। एक है आई एम द एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दैट मीन्स मुक्ति। एंड देन ही से सरेंडर ऑन टू मी। बट प्रभु जी श्लोक नहीं याद है। सर्वधर्मान परित्यज 18.6। तो एक तो सही है क्या है कि आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये जानना है। और एक प्रभुपाद ने कहा ये श्लोक को इन कनेक्शन विद दिस। सेम जो क्लास, पूरा क्लास उसके ऊपर था। Yes, Prabhupada said that Sharanam Braja means Anukullena Shilanam Bhakti, means whatever desire of Krishna we have to do that. हाँ, first we have to give up all other desires, सारे इच्छा छोड़ना है and agree to accept Krishna's desire. हमको क्या है, पहले तो
मान लेना है कृष्णा की इच्छा को पूरे करने के लिए, और इसको शरणागति कहते हैं कृष्ण। इस तरह से प्रभुपाद ने कहा ये दो अर्थ है मुक्ति का। हरि बोल। आखिरी प्रश्न। तो प्रभुपाद ने कहा कि इस दुनिया में टायरसम, थकान है, ट्रबलसम, बहुत मुश्किलें हैं, मिजरेबल कंडीशन, एक प्रकार से त्रस्त जीवन है इस दुनिया का। इन सब से अगर हमको बाहर निकालना है तो क्या करना चाहिए? अब प्रभुपाद बोले होल प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कैन बी सॉल्व बाय प्यूरिफाइंग डिजायर्स। और एंड में प्रभुपाद बोले साधु गुरु। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद गेव वेरी प्रैक्टिकल आंसर, लाइक दैट वाज द एसेंस इन वन। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कुछ तो करना है, व्हाट टू डू। सेइंग वी आर इन डिसीज कंडीशन एंड वी हैव टू फॉलो साधु गुरु। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा क्या है? साधु वी हैव टू एक्सेप्ट डायरेक्शन गिवन बाय शास्त्रास। तो शास्त्र ने जो दिया है उन आदेशों को हमको पहले स्वीकार करना है और फॉलो करना है। और फिर प्रभुपाद ने कहा साधु गुरु शास्त्र वाक्य गुरु मुख, मतलब प्रभुपाद ने उसको ये किया, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया। तो तब क्या हो जाएगा? ये सारे जो अलग अलग प्रकार से दुविधा है, प्रॉब्लम, इससे क्या है? जीव मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।